स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम आपको पढ़ाने आ रहे हैं फंडामेंटल फ्रॉम अर्थमेटिक, क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट। स्टेट फंडामेंटल फ्रॉम अर्थमेटिक क्या होती है? स्टेटमेंट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एंड दिस फैक्टर इज यूनिक। कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के फैक्टराइजेशन रूप में लिख सकते हैं। अभी कंपोजिट नंबर क्या होता है? दो नंबर हुज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फर्स्ट वन, express each one of product as a prime factor, just like 140, 156, that one and this one and this one. How will we solve? Then first solution, 1 is for 40, so 140 right, this will be divided by 2, 2 7 is 40 and 2 3 is 6 and 1 is carry, 2 5 is 10 and this will be 5 7 is 35 and this one is 7 is 7. So prime factor 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7 into 1. Just like next one, 156, 2 7 is 40, 14 and 1 there is 2 8 is 16, 2 3 is 6, 2 9 is 18 and 3 1 is 3, 3 is 9 and 31 is 13 and the prime factor of 156, 2 into 2 into 3 into 13 into 1, or we can write 2 by square into 3 into 13 into 1. Just like next one, 5005 will by 5, 1 5 banja 5 and 11 9 99 and 1 carry 11 the 11. This one will is 7 7 is 7 and 2 carry 7 3 is 21. So 5005 is equal to and you can do another question. My dear students, but to find new question is here. Find the LCM into SCF of the following pair of integer and verify that the LCM into SCM is equal to product of 2 number. LCM SCF का मल्टीप्लाई 2 नंबर प्रोडक्ट का होता है। तो ये केवल किसमें वेरीफाई हो सकता है? इसमें और इसमें, बिकॉज ओनली 2 number, it is not verified in this and this and this. So how will, my dear student, how should I do? आप 4 क्वेश्चन जोड़ ले सकते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर आपको 2 तरीके का होता है। एक पेपर बेसिक का होता है, एक स्टैंडर्ड्स का। और ये क्वेश्चन दोनों में आते हैं, बेसिक में भी आते हैं और स्टैंडर्ड्स में भी आते हैं इन 2 marks. So please concentrate your mind. And this one, first the factor 26, 2 1 is 13 1 and next one 91, 7 1 is 7 and 2 carry 7 3 is 30 and 13 1 is 30. So this number can be write subject 2 into 30 into 1 and this 91 7 to 13 into 1. My dear student, SCF, this is highest common factor. ऐसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? माय डियर स्टूडेंट, जो नंबर्स दोनों में कॉमन होते हैं वो एससीएफ में आते हैं, केवल ओनली कॉमन नंबर, जस्ट लाइक 1 and 1 and 13 and 13. This is the SCF. But in the case of LCM,
पहले हम वो नंबर लिखेंगे स्टूडेंट जो कॉमन है, दैट लाइक 13 एंड 1, बट बी राइट दोज रिमेनिंग नंबर विच आर नॉट कॉमन, दैट लाइक 2 and 7. This is the LCM. And verify product of two number 26 into 91, और this will be, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2366, और अगर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कितना आने वाला, 13 into 1 into 2 into 7. This is also 2. So you can do this and this, my dear friends. It is not verified in 3 numbers. My dear student, you can do this one and this one, but I will tell you this one, 4th one, 12, 15 and 21. 2 3 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3, and 3 5 are 15, 5 1 are 5, and 7 3 are 21, 3 1 are 3. So factor 12, 2 into 2 into 3, and 15, 3 into 5 into 1, and 21, 7 into 3 into 1. So my dear students, SCF कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो नंबर विच आर कॉमन, ऑल 3 नंबर. सबसे पहला वो नंबर देंगे 3 नंबर कॉमन, दैट लाइक 1 1, so 1 and 3 also, but no other number common in all 3 numbers. So this is the SCF and LCM. My dear students, पहले कॉमन नंबर लिखेंगे 1 1 1 and 3 3 3, and we write remaining numbers which are not common, just like 2 into 2 and 5 into 7. If we multiply LCM into SCF, this node will be equal to product of 3 numbers. This is possible only 2 numbers, just like this one and this one and this one. So my dear friend, you can do another question, this one and this one. You can take a screenshot. My dear students, fundamental theorem based on the factor theory. Fundamental theorem based on factor tree. So factor tree, and this one x and 2 by and this one 855 and this one 5 3
7 1, and next one 7 into z. First one and second one is x 3 195 3 by and 5 and 30. Find x, y and z. So my dear student, this is a factor tree based on fundamental theorem of arithmetic. How will you calculate? Just like we have to find x is a multiple of into y, and y is a multiple of 3 into 1855, and this one is 371, this one is 72z. So 371 divided by 7, and z equal to 7 5 to 35 or 7 here 21. So z equal to 53, and y is this, and we put y this, then x will come. So x, y and z with the help of, and next one same process, x is equal to 3 into 195, and y will be, y is present, so 5 into 30. This is another answer. Thanks for watching.